from labor. I to help the poor people, but my body needs rest because excess no excuse. ओडिया रे कहि दउची पेटर गिल्गन कोन कले दिन तमाम परिश्रम कला परे प्रत्येक लोक रात्रि होला माने टिके रेस्ट चाहन जे ऑफिशियल आवर के जाउची दिन काम सरला पर आसी संध्या बेले पहुंचुची टिके रेस्ट नबा पाई किंतु संध्या बेले जदि तांको ऊपर किसी एक्सेस लोड दिया जाय फिजिकल लोड इट वुड बी इरिटेटिंग तांको टिके चिड़चिड़ा लागिबो एवं एठी कोन हैची एटा होची क्रिश्चियन माइथोलॉजी कहूची कोन से टेंपल को हमें जाई करी ठाकुर को भोगराग कले के पाउना दी किंतु गोटे दरिद्र लोक आगे जदि कोन तुमे खाइबा जिंस थो से आराम से खाइ नउची सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड मानवर सेवा कि माधवर सेवा तनु सीए कहउतले परफॉर्मेंस करिया पई किंतु तांका बॉडी तांको परमिट दउनो आउ का जदि कोन अछि पचर स्टूडेंट्स वी विल हैव टू मार्च that is the recommendation. Anybody else ask me any question related to your excellency is always been elected and permitted students. Abhishek, from your own point of view, ask me anything else relating to the ballot of Father Gilgan. So many questions are there, students. The difference is that you know everything else, but you must have to be competent in English speaking. That is the problem. Ask me any question relating to the poem, The Ballad of Father Gilgan. You, Shital, ask me something else relating to the topic or poem. Stanza 2, which I expect. Always why he was praising God. If you listen to me, man has several stages in life: infancy, adulthood, adolescence. Thereafter, we are taking the life of old age. Till now, student, up to the age of 25 years, you are the presumers. You can gain knowledge. You can acquire sufficient knowledge. And after gaining knowledge, after 25 years, we are retailing ourselves to our income by investing that knowledge. But the presumption here is that why he was praising God, not anybody else. Actually, student, you see, there is development of a religion, there is development of science and technology. When we are praising God, and God is set within the temple, it is Badadevula. We can say, students, science makes Badadevula, but our faith, our religion corresponds that God is omnipotent, God is omnipresent, God is everywhere, and God is actually all powerful. So, at the initial stage of life, William Butler Yeats was writing about romantic poetry. Actually, he thought that what is the writing of romantic poetry? What is the importance of romantic poetry? You see, so many epics are there in Christian mythology. The best one is the Bible. The Bible is in written form. And the exclamation of a Bible is nothing but the attachment towards God. When we read about the Ramayana, the Mahabharata, the Bhagavad Gita, it is nothing but the attachment of a God towards Almighty. Still then, that is the age difference. You students, when we speak about religion, it would be funny for you. You can say that sir is describing about religion. But student, one age will come, you will pray to God. You say, at the last moment, we are setting about Bhagavad Gita to get salvation or moksha prapti. Nothing is survival without God. God is the correspondence relating to generator, originator, as well as the destructor also, students. So the second pala always, actually stanza always focuses about God has sent us to this earth. We must have to perform the task assigned by God. Suppose students, you are becoming a farmer, you are becoming a doctor, you are becoming a professor. Almost all things are nothing but the presumption of Almighty or God. When you are going to the examination, you are just sitting or praying to Lord Ganesh. That is religion, 1%. But you are fighting, you are donating 99% effort to presume your idea. Albert Einstein gave the principle that is E equal to mc square, the theory of relativity. But he told, religion without science
Religion without science is a lame, and science without religion is blind. So religion is your life, but it must be all supported by science. What we are doing now, it is nothing but the presumption of a God. Suppose students, when you are performing hard labor, God has seen this, God has said it, that that fellow is performing hard labor, and what type of a reward he or she will get according to one's labor. So everything, the concept relating to dynamism, it is of divine nature, it is of spiritual nature. What we are performing, that is nothing but the benediction of a God. Our life is nothing but the contribution of a godly like personalities, but we pray God to get certain type of peaceful occurrence, which is psychological or spiritual in heart and mind. What he is contributing, everything is to God. You see, you must be knowing about so many philosophers have told us relating to religion as well as God. You must be knowing in English literature, the epic poet is John Milton. I had also told you, you must be knowing about the blind poet Santa Kavi Bhima Bhoi. They were powerless, still then their power was envisioned after their blindness. John Milton, when he was blind, he wrote the book Paradise Lost, and for that purpose he became one famous. Paradise lost in the sense, when I lost my eyesight, actually the spirit of natural vocalism came to the forefront. My potency, my potentiality come to the limelight, and people praised me. You say, Santa Kavi Bhima Bhoi was spiritual, you must be knowing, and he spreaded Mohima Dharma. Mohima Dharma. Actually, that spiritual thinking is learned by the PhD holders. I was talking about Suti Chintamani. ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ରୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇନ ନେଚର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆମର ଅଗ୍ର ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆସିଲା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂଜା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଆସିଗଲା ଜହ୍ନକୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଲାଇଫଟା ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଛି, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ହଉଥିବ ବି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଏ କାମ କରୁଛେ, ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି, ସେଟା ଆମେ କିଛି କରୁନା। Actually, it is guided by certain type of spiritual entity. ଆମେ ଯଦି ସେ କାମ କରନ୍ତେ, ଆମେ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲରେ ପଢୁଛେ, ତାହେଲେ 99 କାହିଁକି 100 ରଖୁନା? କୁହ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ତମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ବହି ପତ୍ର ଥାକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ରେଜଲ୍ଟ ହଉନି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ? ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିବ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ କୋଉଠି କଣ କରିଛେ, ये जन्म रे हमको सही अनुଯାୟୀ कोन रिजल्ट का हमको फल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बालाड ऑफ फादर गिलगन के यदि कुछ क्वेश्चन देखा अराइज करो रिलेटिंग टू योर टॉपिक। Listen to me students, actually God is nothing but the potent of incarnation. God is nothing but the potent of incarnation. And when our staunch belief is on anything else, we consider it as God. You see, students, God has created the deer. God has created the tiger. What is the benediction before it, after it, and behind it, students? The thing is that we must have to subjudge what is good, what is bad. And that depends on our consciousness. Father Gilgan was treating the people. Actually, it is one type of advice of Christian mythology. Service to mankind is service to God. You see, Mother Teresa created a leprosy ashram in Calcutta. That's why she got Nobel Prize for Peace. But the thing is that we must have to follow the character of Mother Teresa. Here you say characterization and performance, so on and so forth difference. Most of the people are attending different type of religious ceremonies. Still then, they are not pious in nature. But some people are there, they can get the oblation or salvation of a God by providing certain type of sanctity to this world. You see, suppose you created a temple. You created a temple that is our resourceful. A person has a certain type of a limitation towards the creating of the temple. You must be knowing about Ramachandra.
and the Banarasena created Setuganda. But the contribution of the squirrel was to some extent important. The squirrel contributed a lot. Why other people were not there? Why tiger was not there? Why elephant was there? The charity of an animal, the charity of a personality is benefactor to religious landmarks. And that is nothing but benevolence towards the fellow man. God loves those who loves their fellow men. Suppose student you see, you must be knowing about one of the quotation. You are making friendship, that is pious, that is divine. The thing in this world is divine, that is friendship. Without good friend, no one can do anything else. Kalpana Chawla was well supported by Vinita Williams, for which she was sent to space. You see, Rakesh Sharma was well supported by Peter Gillen, for which he was sent to space. And you must be knowing about APJ Abdul Kalam. Shiva Subramaniam is a teacher. Actually, when students ask him, who is your favorite teacher, who is a good teacher? He put it that my teacher of my schooling, Shiva Subramaniam, asked me to do this or do that. And his advice is nothing but divinity to it. Actually, student, God lives in any lively personalities. He may be friend, he may be father, he may be teacher, he may be brother, he may be sister, anybody else. There is a quotation you must be knowing about. Love plus care, mother. Love plus fear, father. Love plus fighting, brother. Love plus help, sister. Love plus life, better half, wife. And assimilate all these things. Love plus care plus a fear plus a fighting plus helping plus better half. What is that? Best friends. Friend is everything else, students. Actually, you can observe it when anybody else helps anything or wants anything else. That is migrated, that is transferred to well friendship. So when we are getting friendship, when we are assimilating friendship, it is nothing but divine as well as spiritual in nature. Spirit is nothing else, it is thinking process. When our thinking process is good, our action is good. When our thinking process is bad, our action is bad. Before making any action, you see, your thinking process must be pure as well as silent, must be adequate, must be of a good manner. If your thinking process is bad, everything is getting to be bad. Actually, you must be knowing Samarpana Yoga, service to or sacrifice to any personality. That is Samarpana Yoga. आमे जदि कहबा तमे भाबिनियो रास्ता कड़रे गोटे एक्सीडेंट हेची गोटे लोक कोन करछि पड़िछि से मागुछि टिके पानी दियो मागुछि से मुहूर्त रे ताको हमें पानी टे देई देइकरी जदि हॉस्पिटल को नै गले हम पई से गोटे स्कैंटिएबल काम हैला जदि हमें अवॉइड करी पळै गले देखिबो से दिनटा जाका हम थिंकिंग प्रोसेस खाली से लोक कथा भाबिया महानदी ब्रिज ऊपर कार्तिक पूर्णिमार पूर्व दिन गली पड़ला बस तड़कू तो आमे लोकों को उद्धार कले लोकों को मेडिकल को नहीं करी जीवा आम पई सेटा गोटे सैक्रिफाइस ना आमे कोन करबा सांगा मानु फोन करे अरे जानिचो आज महानदी ब्रिज तळ गोटे बस गली पड़तला मु देखिछि सेल्फी रे पठेछि देखि व्हिच इज पायस ऑफ नेचर सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड दैट इज द थिंकिंग प्रोसेस एंड इट ऑट टू बी जेन्युइन इट ऑट टू बी सेल्फ सैक्रिफाइस जोटी हमर सेल्फिश रहिबा एटीट्यूड दैट इज नॉट डिवाइनिटी और सैंक्टिटी सूर्य हमु किरण दियंदी ता बदले रे हमु किछि मागंते नै चंद्र हमको सुप्त आलोक दियंती ता बदले रे हमें किछि तांको से मागंते नै किंतु आमे तांको सब बेले पूजा कर and it needs patience. Okay students, अब किछि क्वेश्चन अछि anybody else? Tarun, from your point of view, Abhishek, anything is relating to the ballad of Father Gilgan? Plain पानी अछि के what available in the market. That's why Abhishek is silent. Of course, I have not got it.
Okay, students, Smriti, anything else? Sorry? In deep swayed to and fro. What is the meaning swayed? What is the meaning swayed? Swayed means movement to and fro. That is the processing. Here and there. That is the phrase swayed. Swayed to and fro. I am swayed to and fro. Just thinking about what happened. I neglected my duty. When I will return to the Almighty, He will ask me that Father, you have not performed your task. That's why you have neglected. And what type of punishment I would provide you. Next, students. Okay, students. So far as invitation 2 is concerned, we have covered the night. No, Doctor's word. Nothing else. Listen, students. The doctor's words. It's by R.K. Narayanan. Actually, students, so far as English literature is concerned, we have learned about story, we have learned about poem, we have learned about poetry, we have learned about novels, we have learned about epics, so on and so forth. And each and every topic has its father. But when we consider about India as well as Indian literature, the father of Indian English literature is Raja Ram Mohan Rai. Raja Ram Mohan Rai for the first time was an anchor for the development of English literature in India. And you say Arya Samaj was created, Brahmo Samaj was created for the development of literary content. But Raja Ram Mohan Rai was practical because you must be knowing about he was the inventor, he was the actual improviser for abdicating child marriage, for implementing widow marriage. Everything was, is, and will be in his name, students. And R.K. Narayanan is very potent. R.K. Narayanan writes novels, writes stories, and he is considered to be the mentor or founder or father of Indian novels. So, students, introducing the author, Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami was born in 1906 and died in 2001. That is the biographical representation. He is an Indian English novelist and short story writer. His best exponent was Malgudi. Actually, student, you see, everybody wants peace. Where everybody wants peace to be a garden-like structure. A garden where different type of trees are available. A garden where the voice of the cuckoo is representable. A garden where the peacocks are waiting for the sun ray. A garden where the mind is calm and quiet. That's why there is the creation of Shantiniketan. That's why there is the creation of Satyavadi Manovidyalaya. That's why there is the creation of You Must Be Khamara Darbar, that is Pondicherry Sima Aravinda Ashram. Calm and peace environment is essential for educational improvisation. So, R.K. Narayanan is an Indian English novelist and short story writer. And his narrative highlights social context and provides a feel for his characters through everyday life. When a man or a child or an infant gets birth, at that time, our life is subjected by certain type of medication. Our life is to be instinct by the support of a medicine. And the medicine prescriber are nothing but the doctors. Actually, students, you must be knowing about the coronavirus. The first one were the doctors. Second one were the police officers or policemen. So on and so forth, students. So when we consider about this topic, ଯେତେବେଳେ topic କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତମ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଥିବ, R.K. ନାରାୟଣ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, his narratives highlight social context. Social context in the sense related to society. Society ବାବଦରେ କିଛି improvise କରିଛନ୍ତି and provide a feel for his characters through everyday life. A man is judged by character. A man is judged by character and a doctor is judged by his nature.
So students, he has brought out the humor and energy of ordinary life and displayed compassion and humanism in his fiction. So students, when we are worshiping anything else, तमे को मंदिर जा, मस्जिद जा, गिरजा जा, किंबा तमे जाओ गुरुद्वारा जा, सब जगह को जाओ, जोटी मानविकता नहीं सेठी धर्म नहीं, जोटी मानविकता नहीं सेठी धर्म नहीं, सेठी पे हमें जो कहि के विशेष करी सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, रिलीजन एब्सेंट रे जदि हमें कहबा जे प्रकृति रे हमें धूप झुणा भलो कदली भलो पिठा पणा करी के ठाकुर को दावा, ठाकुर किछि पांदे, ठाकुर पाखरे गोटे जोग दरकार, समर्पण जोग, किछि डिवोशन दरकार, किछि शांति दरकार, किछि त्याग दरकार। जदि हमें कहबा रिलीजियस एपिक जोटा भी तमे कुओ, रिलीजियस एपिक बाबद रे हमें जदि एपिक पोएट कहउचे जॉन मिल्टन को, ताले हमें कहबा फादर ऑफ रिलीजियस पोएट्री होचंदी किए अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप तंकर जेते लेखि चंदी पिले सब गुडा एक्सपोजिशन है जे रिलेटिंग टू ऑलमाइटी। ताले एठी हमें जदि कहबा कंपैशनेट ह्यूमनिज्म मन रख, गोटे डॉक्टर जेतेबेले गोटे पेशेंट रो सेवा करी ताको रिकवर करै देला, ए सोसाइटी रे समस्त तापर प्लीजिंग होंदी एवं दैट इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ डिवाइनिटी। कौन सी जगह गोटे स्वर्गीय भाव न थाए, स्वर्गीय भाव माने मंदिर को जीवा घंटा बढ़ेकरी कलिया पड़िबा सेटे स्वर्गीय भाव। हमर जति कर्तव्य भगवान हमको देइचंदी ताको हमको परफॉर्म करिबा पई पड़िबो। ही हैज क्रिएटेड ए फिक्शनल टाउन कॉल्ड मालगुडी दैट स्टूड फॉर रियलिटी। आपले हम मन भीतर तमे जानि दिबो जते बेले हमें इसे लिखुचे पिले पहिलो इसे लिखिबार सबुठारु बड़ एस्पेक्ट कोन, इसे लिखिबार सबुठारु बड़ एस्पेक्ट कोन? What is the aspect? Imagination. तमे पळैला महानदी रे प्रबल पानी आइची, संध्या बेलू सब पळैला है, चलो महानदी रे देखिया केते जोर बन्या पानी आइची। किंतु प्रकृति रे जने जेते तमे देखिबो छोट बेले ओडिया लिटरेचर रे मैक्सिमम एसे आसे वर्षा ऋतु रे बन्यार दृश्य बा महानदी रे बन्यार दृश्य आसे ना नहीं एसे, सेटा कोन समस्तकर लेखा समस्तक समान हो? जहार जति कि इमेजिनेशन थिबो, थिंकिंग प्रोसेस थिबो, से तो भल लिखि परिबो। ताले देखिबा मालकुडी रे से जो थिंकिंग प्रोसेस रे फिक्शनल आइडिया देई चंदी, दैट इज रियल एंड कंसीडर टू बी द reality for the generations come. Warm up a doctor saves life of both which is skill and more which is words. डॉक्टर को हुअंतु कि भगवान को हुअंतु सब बेले ट्रस्ट दरकार, विश्वास। तम देह खराब अछि, मुंड प्रबल बिंदुची, तमे देखिबो जेपन मैन वर्सेस मेडिसिन, एम वर्सेस एम, तमे देखिबो गोटे बुक लेखि चंदी अभिजीत घोष, से कैंसर पेशेंट रिकवरी पाई चंदी, से लेखि चंदी गोटे बुक एंजल्स ऑफ होप। प्रकृति रे संचार को माने करू चंदी डॉक्टर माने, से रिकवर हेले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल लो मते साइंस फिल्म को बहुत जस्ट से बहिक रे एते बढ़िया एम्फेटिकली एनालिसिस करि चंदी रोल ऑफ द डॉक्टर्स टुवर्ड द सोसाइटी। गोटे सोसाइटी रे डॉक्टर रो कोन रोल आछि आ डॉक्टर को वर्ड को बेस करी आमे केमते रिकवर होउछे। मु उदाहरण स्वरूप ले कहबी, कंसीडर व्हाट द टॉपिक इज, तमरा देह बहुत खराब अछि, तमे गलो ठाकुर को पूजा कलो, विभिन्न प्रकार धूप दीप देकी आसिलो, ठाकुर तुम कोन कहले जा घरे टिके रेस्ट नबु, कुसुम पानी पीबु, आ से मेडिसिन गैस टैबलेट विदाउट माने एम्प्टी स्टमक रे ठाकुर एडवाइस देले कि? ठाकुर से भाषा गुडा कौन से गोटे इंटरनेटेड वर्ड आसिला कि डॉक्टर मानक पई, ଏବଂ सेही स्पिरिट रे मनक डिवाइन स्पिरिट गुडा पळे आसे का पाकु डॉक्टर को, से जोटा कहते हमें ट्रस्टफुली ताको मानि लेले एवं ऑटोमेटिकली हमें कोन होले सक्सेस है भाबिनियो। तणु पिले ए डॉक्टर सेव्स बोथ विथ हिज स्किल एंड मोर विथ हिज वर्ड्स। ए दुनिया रे सबुठार मनक वर्ड रो वैल्यूटा होचे अधिक, वर्ड होचे वॉच वैल्यू फॉर सोशल रिस्ट्रक्चर। So a doctor saves lives both with his skill. डॉक्टर माने जदी एक्सपीरियंस अछंदी ताको स्किल की कोन करिवे ना एक्सपोज करिवे, अर्थात हम पाकु कोन करिवे, हम माध्यम रे से कोन करिवे, शोध करिवे जे हम प्रकृति रे होची गोटे गोटे कोन से माने होचन गोटे गोटे भलो डॉक्टर, एवं ताको स्किल देखेबे, दक्षता देखेबे, आ बेले बेले कोन करिवे टिके सोलाक्सिंग वर्ड कहिबे। गोटे गोटे डॉक्टर अछंदी बुझेई कहि देबे कोन हेची देह कोन खराब अछि, ए किछि एनी मो ए टिके एक्सरसाइज कर आउ फिजियोथेरापी नै जा भलो होई जेबो, आउ गोटे गोटे कोन हेची ए तो एते भलो होबनी पळा एम्स,
ए कटक कटक क्या देखा ना मु सत कथा कहूँ कौन गवर्नमेंट चाकरी करते ना प्राइवेट रे ना चाष करूछ से अनुसार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें से अनुसार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती से देखिए तुम कह आज्ञा मुझे गोटे कंट्राक्टर अच्छी बिल्डर अच्छी ना ठीक अच्छे गोटे कम करूँ आप ये पढ़ा भल हो किसी ना पशु नहीं पढ़ा किसी ना सम हॉस्पिटल पढ़ातु जो मैंने गोटे गोटे जगह खर्च करेंगे से हूँ एबिलिटी से हूँ परफॉर्मेंस डॉक्टर वार्ड उपरे बेले बेले आमर कौन करे निर्भर करे रोगर क्योर होगा केते मेडिसिन लिखती अधिकांश किंतु अधिकांश जो एडवाइस बा कंसल्टिंग करती मैक्सिमम रिकवर हो जाए Do you agree it is because the patient's will to survive is what matters so think what's of a doctor work miraculously for a patient even in a critical condition हाँ पिले गोटे गोटे डॉक्टर अच्छे बहुत तुमको सरल भाव में इजी वे बुझे देवे देहटा केमती भल हम बोली एंड गोटे गोटे क्रिटिकल कंडीशन रे लेट्स रीड द स्टोरी एंड सी इफ ह्यूमन लाइफ हैंग्स ऑन ए वर्ड्स डॉक्टर्स वर्ड प्रकृत रे हम मनुष्यर जीवनटा क्या देहरे झुलुची डॉक्टर मान वर्ड रे डॉक्टर मान भाषा रे डॉक्टर मान जदि कहबे भल डॉक्टर मान कहबे मंद बेसिकली डॉक्टर मान वर्ड वैल्यू को बेस करी हमें प्रिज्यूम करि थाउ read the following unit of the story and acquaint yourself with the character of a Dr. Raman Dr. Raman कर character बाबत रे कौन कर analysis करो the text people came to him when the patient one was his last legs Dr. Raman often burst out why could not you have come a day earlier the reason was obvious visiting fee 25 rupees and more than that people like to shriek the fact that the time had come to call in a Dr. Raman for them there was something ominous in the very association पिले मो उदाहरण स्वरूप कहबी गोटे हॉस्पिटल अच्छी से हॉस्पिटल रे धरा जाऊ तुम जेजे पढ़ी एक्सपेक्ट करथिले कोरोना बेले तुम बंधु बांधव जदि कहबे अरे आमे को हॉस्पिटल को जीवु तमे केबे से हॉस्पिटल ना धरिबो दैट इज ओमिनस अशुभ गोटे गोटे हॉस्पिटल गोटे गोटे लोक को शूट करे आउ गोटे गोटे हॉस्पिटल को जाई से बेड ऊपर सोई गली जे भल तमे भी देखिबो गोटे गोटे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन समस्त जानिबो कटक टाउन में मैक्सिमम अछंती फैमिली डॉक्टर किछि किछि हैला फोन कर देबे डॉक्टर आसीबे घर को लिखि दे जिबे सेही मेडिसिन ताम काम करिवो आउ का मेडिसिन काम करिवो दैट इज गोटे साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी रे सेटा अछि गोटे कथा एटी मु पिले कहूची ताले आमे कोन करू इनिशियल स्टेज रे केही डॉक्टर को पास को जानतिनी तमर द्वारा जो तम घरे कहइबो आ मु कोन करी मोर प्रबल मुंड बुंची ना काहे कि मुंड बुंची ना मुंड बुंची तो मोर मु ठंडा मेडिसिन मेडिसिन कोन खाइबे आ घर लोग कहबे ठीक अछि तू किछि करना टिके जाई सोई पड़नु तमे देखिबो कामली किछि समय सोई पड़िबो अधिकांश लोक को मुंड बिंधा भल होइबो मन रख जोटा अल्टरनेटिव इंग्लिश पिला गोटे कॉमन कोल्ड चैप्टर रे अछि आ गोटे गोटे पिला देखिबो ठंडाटा हैला कि कोन हैला तमे विदाउट मेडिसिन रे भी किछि दिन पर सेटा रिकवर होई जो बट इट नीड्स पेशेंस गोटे गोटे लोक अछन निज देह पई को मेडिसिन से डॉक्टर को कंसल्ट करिवेनी निजे खाइ करी भल होई जेमिति कोन हाउनी ताले ए चैप्टर हम कोन कहू देखिनियो people came to him when the patient one was his last legs what is the meaning of a last legs at the 11th hour शेष मुहूर्त रे at the 11th hour माने शेष मुहूर्त रे अधिकांश देखिबो रोग होउतबो जीवेनी रोग हे बड़ी 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 जते बळे एक्सेस हेई गेला सेते डॉक्टर पाकू जीवे तार कारण कोन काले हमर अधिका कोडी पैसा पत्र खर्च हो हम पकरे पैसा थिबो नथिबो एटा मध्ये रियल पिले the reason was obvious visiting fee 25 rupees 25 टका तंग visiting fees दिला कार डॉक्टर रमन कर and more than that people like to seek the fact that the time had come to call in Dr. Raman for them there was something ominous in the very association डॉक्टर रमन जदि कहा को नाही कर देबे ये भलो हबनी से आ जिंदगी रे भलो हबनी डॉक्टर रमन जदि कह देबे हां भलो ही जीवो ताल से निश्चित रूप रिकवरी होबो as a result when the big man came on the scene it always a quick decision one way or another what is the meaning of a big man means a person having monetary or financial capability great man having great characters or reputation Mahatma Gandhi was the great man of India but when we consider about Mukesh Ambani the big man of India so students there was no scope or time for any kind of wavering or whitewashing
Long years of practice of this kind had bred in the doctor a certain cut truthfulness. For that very reason, his opinion was valued. He was not a mere doctor expressing an opinion, but a judge pronouncing a verdict. जने जने अच्छे जोटा प्रिजज करी कहती एनालिटिकली सेटा बेले बेले सत कथा हो जाए सत कथा हो जाए प्रेडिक्शन बहुत कथा बेले बेले सत हो जाए जोटा सत हवा कथा नुहे कि सत हो जाए तार कारण कौन पिले समस्त किसी ना किसी स्पिरिचुआलिटी अच्छी डिवाइनिटी अच्छी जिते बेले डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखुचंती आरएक्स लिखती आरएक्स माने कौन इन द नेम ऑफ अ गॉड प्रेस्क्रिप्शन ने आरएस लिखती इन द नेम ऑफ अ गॉड मु लिखुनी आकु लिखुचंती किए भगवान लिखुचंती आकु लिखुचंती किए स्वर्गर वैद्य अश्विनी कुमार तेणु पिले आमे जेते बेले जो दिशा प्रेडिक्ट करू सेते बेले टिके स्पिरिचुअलिज्म रो वर्डिक्स हम मन को आसी जाय जेमति जज माने ताको मैंडेट दियंती जज जो मैंडेट दियंती जाति जल्स गाइडेड बाय रिलीजन मु तुमको कहतली ऋषि सुनांक कथा इंग्लैंड रो जे कि फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर सी जिते बेले गले शपथ पाठ कले साथी रे नै कि जाइथिले कहाकू भगवत गीता देखो इंग्लैंड रो प्रीडोमिनेंट हिस्ट्री इंग्लैंड नोस when the sun sets and the sun rises that means which country is independent which country is under slavery but the prime minister became something marvelous and you must be knowing he married a personality relating to Infosys Narayan Murthy's daughter very alarming so student what the topic tells about if you consider the president if you consider the prime minister if you consider the doctor if you consider the number of teachers almost all are the greatest votary of Almighty or God. So there was no scope or time for any kind of wavering or whitewashing. Long years of practice of this kind had bred in the doctor of a certain truthfulness. For that very reason, in his opinion was valued. He was not a mere doctor expressing an opinion, but a judge pronouncing a record. Actually, students, 3 X are there. So far as APJ Abdul Kalam is concerned, 3x गोटे मनीषर जीवन रे टर्निंग पॉइंट आनंती फर्स्ट इज गोटे x एक्सपीरियंस आ गोटे x एक्सपेरिमेंट थर्ड x एक्सपेक्टेशन बुझी परछन नाही एक्सपीरियंस हैला पास्ट एक्सपेरिमेंट हैला प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन हैला फ्यूचर एपीजे अब्दुल कलाम कहिसंती जे पास्ट को थिंकिंग रे न आनी छी ता प्रेजेंट के बेले सक्सेस होबनी आ प्रेजेंट ऊपर जे एपिटोम न करी छी ता फ्यूचर के बे कलरफुल होबो वेरी फाइन कोटेशन ऑफ 3x तमेर कहि बार उद्देश्य आमे सब बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर पाखु जाऊ ना इनी एक्सपीरियंस डॉक्टर पाखु जाऊ एक्सपीरियंस डॉक्टर कोन करबे जे एक्सपेरिमेंट करि देबे गोटे पिलर रो स्टैंडर्ड कोन अछि की भଳି अछि मु तमर एटी पाठ पढौछ मु आजि पाठ पढौछ काली कि पर दिन पाठ पढ़े पारे कि न पढ़े पारे किंतु मु जानछि तम मानक भीतर कैपेबल पिला अछंती जो पिला माने मो पाखरे मो गाइडेंस रहंती कि आउ गाइडेंस रहंतु से निश्चित रूप से सक्सेसफुल हेतु सियोर स्टूडेंट्स कारण गोटे प्रेडिक्शन 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमको कहि दउची को पिला को लाइन रे जाई सक्सेसफुल हेई परिबो हमें भी सही को सोल्व करके आसीछु हमें ताको मैटरलाइज करछु पिला मानक देरे पिला माने हम पई होचंती एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन ताको हमें सक्सेस आनी जो बोली प्रेडिक्शन कर दउची ताले मन रख जे परफेक्ट डॉक्टर से केबे व्हाइट ओवरिंग करबेनी व्हाइट यूज करबेनी हां हां भलो होई जिवो किछि टेंशन नहुंतु ने आपण भलो होई जिवो आ देखंतु काली आडू कोन होउची धरा जो काली सकाळ को से सोउची सब दिन पई सोइला तमे से डॉक्टर नारे कोन कहबो रे से हमको डॉक्टर बाकू जीवनी रे से जोटा कहबो सेटा होय सेटा होय ना सत कथा पिले 2014 मसिया रे मो दादा पोखर रे गाधौतिले पड़ी गले कटक रे नंबर 1 डॉक्टर कटक रे नंबर 1 डॉक्टर पुनी डिपार्टमेंट रे एचओडी मो स्टूडेंट रो रिलेशन देखो मु जाई पहुंचली दादा मु नेती गलु काई आनिछो नहीं जाओ कोन मुई घंटा 2 घंटा तक चली जीबे अरे इनु हमें जानू एक्सपेक्टेशन करनु कोन पोखरी जाइथिले पोखरी आज काली सब पहाच सिउड़ी रे खसी गला गुडो पानी रे पड़ी जदी चली जाओ हम सेठु फोन करलो
रेडी कर जोगाड़ जंत्र कर डाकी दियो बंधु बांधव को आ कुराड़ी कटुरी धरिक काठ फाट हणाणी करंतु घरे भी किछि किछि रिलेटिव माने कांदीबा आरंभ करना कोन कहबो से डॉक्टर जहां कहंती सेटा हे जाय सुन से डॉक्टर जहां कहंती सेटा हे जाय सेटो संध्या बेला को जते आसिली मु कॉलेज छकरे गोटे कॉमर्स कोचिंग सेंटर अछि सेठी भी इंग्लिश पढ़ाए से सार मते कहले सार आपण सेठी कहीं जाउछनी मु कहले आउ आपण एठी हम मंगलाबागी छकरे डॉक्टर अछि बचन ना दिमु ना भी कहउनी तांकर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट तांका पाखु पळे जाउ ना दी कोन 100-150 टका फीस नेबे प्राइवेटली देखै दिउ मु टेके टेके आइलु हम पुत्रा मो स्टूडेंट माने पीजी स्टूडेंट मते हेल्प कले मु तांका पाखे तळे पहुंच गेली कहले आकर तो किछि हेइनी अरे कॉन्ट्राडिक्शन मु संगे संगे फोन करी रिलेटिव मानु कहली हे तुम व्यस्त हो ना हमें जो डॉक्टर पाखु आछि न्यूरोलॉजी रो से कहउछन तांकर किछि हेइनी घरे टिके से हसकुस खेली गेला बंधु बांधव सब जे आइले रहिले राति घरे हमें तो कटक रहिछु पिले से कहले गोटे मास को ट्रीटमेंट कर एबे मिनिमम 12-13 वर्ष तांकर किछि होबन एबे देख 14 मसिया केते वर्ष लाडी 8 वर्ष दादा साइकिल चलोछु मु यही कथा मिनिमम 100-150 जगह रे कहलेनी तनो डॉक्टर वर्ड भी वैल्यू डिफर करे के जण डॉक्टर कहबे भारी क्रिटिकल कंडीशन तनो आउ गोटे गोटे जगह को जीव डॉक्टर कहबे सोलाक्सिन किछि हेइनी व्यस्त होनी हप सेति पय गोटे टर्म को जाय डॉक्टर्स डिफर नाना मुनि कर नाना मत डॉक्टर्स डिफर सो व्हाट द टॉपिक टे बहुत डॉक्टर अछनी परफेक्टली कहि देबे ना ये पेशेंट आ होबनी पेशेंट होंदिनी आउ गोटे गोटे डॉक्टर कहबे सोलाक्सिन रे नहीं नहीं किछि ट्रीटमेंट करिबा देखिबा कंडीशन कोन होउची लास्ट स्टेज आसिले कोन आसीबो तथा मु भाबुची कंप्रोमाइज